Assalamu alaikum, New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 4th. I hope you all are good. Dear students, today we are going to start our next lesson, lesson number 22. This is our revision part 2. In this we will cover chapter 6 to 8, Water and Power to People and Work. Today our revision chapters are 6, 7 and 8. 6 is Water and Power, 7 Peace in Conflict, 8 one is People and Work. Our first topic is natural resources. A natural resource is what people can use which comes from the natural environment. Examples of natural resources are air, water, wood, oil, wind, energy, natural gas, iron and coal. यानी नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कुदरती तौर पर माहौल से हमें मिलते हैं, जिनके अंदर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज शामिल हैं, जैसे हवा, पानी, गैसेस हैं, एनर्जी है, आयरन है, हीट है, विंड है, ऑयल्स हैं डिफरेंट टाइप के, कोल है, आयरन है और बहुत से मेटल्स और मिनरल्स शामिल हैं. ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. Our next topic is fresh water. Fresh water is any naturally occurring water except seawater and brackish water. Fresh water includes water in ice sheets, ice caps, glaciers, icebergs, bogs, ponds, lakes, rivers, streams, and even underground water called groundwater. 3% of the Earth's water is fresh. 2.5% of the Earth's fresh water is unavailable, locked up in the glaciers, polar ice, caps, atmosphere and soil. यानी अर्थ के ऊपर टोटल जो फ्रेश वाटर है वो 3% है, जिसमें से 2.5% अर्थ का जो पानी है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, बिकॉज या तो वो पोलर आइस शीट्स के अंदर होता है, कैप्स के अंदर होता है, ग्लेशियर्स के अंदर होता है, या फिर वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, या फिर वो ज़मीन के अंदर मौजूद है. तो यानी उस पानी तक हम नहीं पहुंच पाते. Our next topic is wells. A well is an excavation or a structure created in the ground by digging, driving or drilling to access liquid resource, usually water. यानी वेल्स जो हैं वो सिर्फ पानी को तलाश करने के लिए नहीं खोदे जाते, उसके अलावा भी बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनको नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हासिल करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं, जिनमें सबसे अहम ऑयल होता है. द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ वेल इज अ वाटर वेल to access groundwater in the underground aquifers. The well water is drawn up by a pump or using containers such as buckets that are raised mechanically or by hand. Wells have traditionally been sunk by hand digging, as is the case in rural areas of the developing world like Pakistan. There are many wells in our country even today where there is no supply of piped water. यानी पाकिस्तान के अंदर आज भी ये ट्रेडिशनल मेथड जो है उसे यूज़ किया जा रहा है, और बेसिकली इसके अंदर सिंपल ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता है, खोद कर या ड्रिल कर कर जो है पानी को हासिल किया जाता है. Our next topic is tubewells. A well consisting of an iron pipe with a solid steel point and lateral perforation near the end, which is driven into the earth until a water-bearing stratum is reached, when a suction pump is applied to the upper end. You can see in the picture. Tubewells are also installed to control the maintenance of water logging and the subsequent salinity, damaging many parts of the Indus basins. बेसिकली ट्यूबवेल्स जो हैं वेल की ही ज़रा मॉडर्न फॉर्म है, और ये उन एरियाज में लगाए जाते हैं जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जैसे इश्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं, ताकि एक्सेस वाटर जो है उसको सॉइल में से ख़त्म किया जा सके.
Okay, dear students, our next point is peace. Peace से मुराद अमन. Peace is a time without any fights or war. In a large sense, peace or peacefulness can mean a state of harmony, quiet or calm that is not disturbed by anything at all, like a still pond with no ripples. Peace is a concept of societal friendship and harmony in the absence of hostility and violence. In a social sense, peace is commonly used to mean a lack of conflict and freedom from fear of violence between individuals or groups. यानी पीस से मुराद ऐसी जगह होती है या ऐसा टाइम होता है पीस जिसके अंदर कोई फाइट नहीं होती, कोई वॉर नहीं होती, सब अपने काम से काम रख रहे होते हैं, एक हार्मनी होती है, खामोशी होती है, पुरसुकून माहौल होता है, वो पीस कहलाता है. और जब किसी माहौल के अंदर, किसी इन्वायरमेंट के अंदर वायलेंस होते हैं, हॉस्टालिटी होती है, तो उससे जो माहौल है उस या वहाँ उस माहौल का जो अमन होता है या पीस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है. जिस जगह कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, वॉर्स नहीं होंगी, आज़ादी होगी, वायलेंस का डर नहीं होगा इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के दरमियान, वहाँ पे जो है अमन होगा, पीस मौजूद होगा. Our next topic is conflicts. Do you know what is conflict? A struggle or clash between opposing forces, battle, a state of opposition between ideas, interests, etc., or a disagreement or controversy, a clash as between two appointments made for the same time. For example, like Kashmir conflict between Pakistan and India. यानी conflict जो होता है, एक तनाज़ा होता है, एक मसला होता है, एक प्रॉब्लम होती है, या दो फोर्सेस के दरमियान क्लैश की वजह होती है, झगड़े की वजह होती है, किसी पॉइंट पे वो डिसएग्रीमेंट शो कर रहे होते हैं दोनों, किसी आइडिया को कोई दो पर्सन्स या दो जो स्टेट्स हैं या दो ऑपोजिट लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे किसी आइडिया को, कोई इंटरेस्ट सेम है लेकिन उसके ऊपर भी क्लैशेस मौजूद हैं, तो ऐसे जगह जो है वो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म लेती हैं, तनाज़ात जो हैं वो जन्म लेते हैं. जैसे कि कश्मीर का जो इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा से कन्फ्लिक्ट की वजह रहा है, हमेशा से तनाज़े की वजह रहा है. Our next topic is population. Are the inhabitants of a particular place. Population is the number of people or animal in a particular place. यानी एक खास जगह के ऊपर जो लोग रह रहे हैं या किसी भी एरिया के जो लोग हैं या इवन वहाँ पे एनिमल्स भी मौजूद हैं तो वो वहाँ की आबादी कहलाती है. An example of population is over 8 million people living in New York City. यानी 8 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं तो वो न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन कहलाएंगे. यानी किसी भी एरिया पे जो लोग रहाइश पजीर हैं या रह रहे हैं वहाँ के रहायशी हैं वो उस एरिया की आबादी कहलाती हैं. Our next topic, every job has a value. Some people earn a lot of money for work, but on other hand, some people don't earn so much. Every job that is done has a value. Some jobs are good and highly paid, and some are bad and less paid, but have same respect and values. The Prophet Muhammad, peace be upon him, was asked what type of earning was best, and he replied, "A man's work with his hands." The Prophet Muhammad ﷺ said that it is better for any of you to carry a load of firewood on his own back than to beg from someone else. यानी इससे यही हमें पता चलता है कि नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, जॉब किसी भी तरह की हो, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी एक वैल्यू है. अपने हाथ से काम करके जो कमाना है वो हलाल कमाना है और उसमें बरकत भी होती है और उसके बहुत से फायदे भी होती हैं. बजाय कि किसी के आगे हाथ फैलाया जाए, खुद मेहनत कर कर जो रिस्क कमाया जाता है वो रिस्क जो है वो अल्लाह ताला को पसंद है. और लोगों को भी चाहिए कि अगर कोई काम छोटा कर रहा है और उसको कम पे किया जा रहा है तो उससे भी उतनी ही रिस्पेक्ट और वैल्यू दी जाए जितनी एक हाईली पेड इंसान को दी जाती है. Okay, dear students, there are some important questions. Question number 1, write about the sources of fresh water in Pakistan.
Answer is the sources of water in Pakistan are rainfall, wells, tubewells, streams, and rivers. Next one is explain the differences between a well or and a tube well. Answer is a well is a large hole dug in the ground to obtain water from underground sources. एक सिंपल सा मेथड इसके अंदर यूज किया जाता है, एक घड़ा जो है वो खोदा जाता है या ड्रिल किया जाता है और उससे पानी जो है वो हासिल किया जाता है. लेकिन ट्यूबवेल जो है वो एक मॉडर्न मेथड है. ट्यूबवेल्स आर मेड बाय ड्रिलिंग डीप होल्स इन द ग्राउंड. अ ट्यूब इज पुश्ड इनटू द होल. वाटर इज पंप आउट बाय इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स. जबकि वेल्स के अंदर जो है आप बकेट और रोप के थ्रू जो है पानी को बाहर निकालते हैं. Our next question is question number 3. How does the government find out about the people living in Pakistan? The government find out about the population in the country by holding census after every 10 years. यानी मर्दमशुमारी करवाकर 10 साल के बाद जो है गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन की तादाद जो है या आबादी कितनी है उसके बारे में मालूमात हासिल करती है. Next one is question number 4. Why do we need to know the details about the country population? ऐसी कौन सी reasons हैं जिनकी वजह से हमें population के बारे में जानना जरूरी है? तो आंसर है we need to know the details about the country's population in order to plan for future. यानी हमें फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए कितने हॉस्पिटल्स हमें चाहिए, कितनी बिल्डिंग्स चाहिए, कितने रोड्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन हमें कितनी चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ फैसिलिटीज हमें कितनी चाहिए. तो ये सारे गवर्नमेंट को प्लान करना होता है और इसके लिए पॉपुलेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई इट इज रॉन्ग टू जज पीपल बाय द टाइप ऑफ वर्क दे डू? Answer is it is important that we don't judge people by the work they do, as every job has to be done and has a value. यानी हर जॉब किसी भी तरह की हो उसकी अपनी एक वैल्यू और एक रिस्पेक्ट मौजूद है. Our next question is question number 6. Define the terms peace and conflict. Conflict means a disagreement or a fight, और peace से मुराद है there is no unrest in the country or between the individuals or groups. यानी ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के दरमियान किसी भी किस्म पे कोई अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब पुरसकून है तो वो पीस कहलाएगा. और अगर कोई डिसएग्रीमेंट और फाइट्स मौजूद हैं तो वो कन्फ्लिक्ट्स कहलाएंगे. What does the UNO do? The UN is decided to find peaceful solution to any conflict. कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए तो यूएनओ का काम होता है कि कोई अच्छा पीसफुल सोल्यूशन जो है वो निकाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी झगड़े को खत्म करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मेनी वॉर्स हैव देयर बीन इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 30 years? 30 साल के अंदर वर्ल्ड के अंदर तकरीबन कितनी वॉर्स हुई हैं? तो इन द लास्ट 30 years 120 wars have been fought all over the world. तकरीबन 120 के करीब वॉर्स जो हैं दुनिया के अंदर जो हैं वो लड़ी गई हैं लास्ट 30 years के अंदर. Our next question is question number 9. Name the essential requirements for industry. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? तो in order to set up an industry it needs power supply, water and raw material. यानी किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, रॉ मिनरल्स की ज़रूरत है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री? इंडस्ट्री के लिए वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? Water is important for industry as it is required in the processing of most of goods. बहुत सी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इंडस्ट्री के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डज सूदिंग मीन्स? सूदिंग से क्या मुराद है? सूदिंग मीन्स टू डू समथिंग लाइक लिसनिंग टू कुरान और डूइंग समथिंग टू calm yourself. यानी सूदिंग से मुराद है अपने आप को पुरसकून करना, पुरसकून रहना, और इसके लिए चाहे आप कुरान पाक को सुने या कोई और ऐसा काम करें जिससे आप खुद को काम कर सकें. Our next question is question number 12. Make a list of the services provided by the government. Which one is most important to you? Why? अब आपने लिस्ट बतानी है कि कौन सी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट आपको कौन सी लगती है और क्यों लगती है. The government provides education, health, water, food, defense, loans, transportation services. Service of education is very important because it is necessary for good life and economic development of the state. यानी एजुकेशन एक ऐसी सर्विस है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है और ये अच्छी लाइफ गुजारने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
Okay, students, there are some important true false. First one is every job has value. Yes, this is true. हर job की अपनी एक value होती है. A conflict is a disagreement or fight. Yes, this is true statement. Conflict जो होता है किसी भी disagreement या fight को कहा जाता है. Most of people in Pakistan live in cities. This is false statement. ज़्यादातर आबादी जो पाकिस्तान की है वो rural areas जो हैं उसमें रहती हैं, देहातों में यानी गांव के अंदर, villages के अंदर रहती है. The UN has 51 मेंबर स्टेट्स, 120 मेंबर स्टेट्स जो हैं उसके हिस्सा हैं यूएनओ का, इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कहेंगे. फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड अंडरग्राउंड. यस, फॉसिल फ्यूल्स जितने भी होते हैं हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. यस, कॉन्फ्लिक्ट जो है, झगड़े जो हैं या तनाज़े जो हैं वो जिंदगी का हिस्सा हैं. देयर आर नो सॉल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जिसका कोई सॉल्यूशन ना निकाला जा सके. Hydro means water. Yes, this is true statement. Next one is cool breeze blows from the sea towards the land. This is true statement. Next one is there are about 110 million people in Pakistan. This is false statement. There are over 2 or 7 million people in our country. Okay, students, there are some important fill in the blanks. First one is any matter which is in a natural state and not man-made is all raw material. यानी रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि नेचुरल स्टेट में मौजूद होता है और जिसे इंसान ने नहीं बनाया होता. यानी कुदरती जो चीज मौजूद है वो रॉ मटेरियल कहलाती है. नेक्स्ट वन इज पीपल लिविंग इन अ कंट्री बाय कंडक्टिंग अ सेंसस. कंट्री के अंदर कितने लोग हैं उनके बारे में जो मालूमात है वो हम सेंसस कंडक्ट करके जो है हासिल कर सकते हैं या करते हैं. द गवर्नमेंट हैज मैनी डिपार्टमेंट्स टू हेल्प द पब्लिक. गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं और इन डिपार्टमेंट्स का बेसिकली काम पब्लिक को हेल्प आउट करना होता है. फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर. जितनी भी खादें वगैरह हैं या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं फील्ड्स की अच्छी ग्रो के लिए, उनको अच्छा ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स की जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ होती है उसको अच्छा करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं. फाइंड आउट अबाउट पीपल लिविंग इन कंट्री बाय कंडक्टिंग अ सेंसस. लोगों के बारे में जो मालूमात हासिल की जाती है कंट्री के अंदर कितने लोग मौजूद हैं तो वो सेंसस के थ्रू हासिल की जाती है. इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वी हैव फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. अगर हम नॉर्दर्न पार्ट्स की बात करें तो हमारे जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो नॉर्दर्न पार्ट में मौजूद हैं. नेक्स्ट वन इज इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स ड्यूरिंग द डैश सीजन. किस सीजन के अंदर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है तो वो मूनसून का सीजन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रेनफॉल होती है. Dear students, I hope you understood all the topics, questions very well. Learn all the exercises, true, false, fill in the blanks, all the work pages for the midterm exam.